रिचुअल होता है ना, लाइट कैमरा एक्शन वगैरह जो भी है. Let me just know, if you guys can hear me, if the audio and the video is good enough. By the way, this session is sort of an open house for every one of you, just to understand, कि यार फाइनेंस में क्या होता है, क्या क्या तरीके के प्रोफाइल्स आते हैं. बहुत ज्यादा मिथ्स भी है, बहुत ज्यादा बच्चों को क्लैरिटी होती नहीं है कभी कभी. So this session is purely for you all, and sort of open house है, sort of informal थोड़ा सा session होगा, because I am more looking at your questions rather than delivering a session. एक आधा सेशन नहीं करेंगे डेफिनेटली. कुछ दिनों के बाद एक सेशन भी करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि यार फाइनेंस में एक्चुअली क्या चीजें होती है. सो एक प्रॉपर पीपीटी का एक सेशन होगा, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं. लेट मी सी आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल है फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लेके, जितने भी प्रोफाइल्स है. हाय तन्मय, हाय विवेक, हाय श्रीराम, हाय आयुष, हाय निनाद, hi Aviral, hi Rishabh. All right guys, so welcome to this session. This is sort of an open house. Ask me anything with respect to finance, and I'll be more than happy to answer your questions. Right from MBA finance से लेके जर्नी कैसा होता है फाइनेंस में, क्या जॉब्स होते हैं, क्या प्रोफाइल्स होते हैं. बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आपने इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह में काम करा है, सो वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे फंडा होता है क्या जेन्युइनली, या फिर वो एक बस फैंटेसी है. सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ओके, सो अर्पण, सीएफए के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, फिर थोड़ा फाइनेंस के प्रोफाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं. somebody was asking something, can a person without background can also make a career in finance after MBA? Okay, so Ambuj, a very valid question guys. अभी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो kindly hit like and sit tight and ask me questions, whatever the questions that you want to ask. पहली बात, नॉन फाइनेंस के बच्चे फाइनेंस कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉन फाइनेंस के बच्चे फाइनेंस कर सकते हैं. आई विल गिव यू सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल जहां पे अगर आप देखोगे फाइनेंस की जो मैक्सिमम प्रोफाइल्स है, जहां पे हम बात करते हैं हेज फंड्स हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया, यहाँ पे तुम्हारे 75% इंजीनियर्स ही है. So engineers are दूर तक not connected with finance, but still they are dominating finance industry today because of their good hold on logical understanding, and because they are damn good at the statistics or number crunching. But again, हर एक फाइनेंस का प्रोफाइल नंबर क्रंचिंग वाला नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आई रियली सक एट नंबर्स, इसलिए मुझे फाइनेंस नहीं लेना है. पर भाई मेरा ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी प्रोफाइल्स है फाइनेंस की जहाँ पे तुम्हें मैथ्स का एन का भी जरूरत नहीं है, क्वांट्स का क्यू भी नहीं लगेगा, और स्टैट्स का एस भी नहीं लगेगा. Honestly, there are so many profiles like that, where you don't just need anything to do with the stats or mathematics. Nothing, absolutely nothing. So अगर आप देखोगे एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का बच्चा आराम से भी फाइनेंस कर सकता है. When I was in IB, my counterparts, I was working for London desk for some time, then I shifted for the US desk. So दोनों जगह पे मैंने ये देखा है कि IITs basically, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये जो बच्चे हैं वो फाइनेंस में ABC में जाके नाउ दे आर लीडिंग द गेम. तो हाँ, कोई भी कर सकता है, फार्मास्यूटिकल वाला भी कर सकता है, anything, anybody. Your review of Fresh Vista Financial Services. Okay, Fresh Vista is a good company. There are a lot of students of mine working with Fresh Vista. It gives you profile in equity research. It gives you profile in valuation. I think it's one of the best company out there. As a graduate, अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो. It's a pretty good company to kickstart with. Okay, I've done my bachelor's in finance purely, but of interest, but I also have a liking towards marketing. Can you suggest careers wherein both can be involved? I plan to do my MBA in finance this year. Okay, तो अगर आप बात करोगे फाइनेंस के बारे में, the kind of field that I come from, जहाँ पे I had worked in the investment management area also. I had also worked in the investment banking area. So यहाँ पे मुझे दोनों का combination दिखता है, because as a trader, when you are dealing in the derivative security, or when you are dealing with any sort of a security, right? So you have to sell also. ऐसा नहीं है कि अगर आप trader हो तो आप sales नहीं करोगे. Definitely, you at the same time got to be a very good salesman. Not a salesman type of salesman, but you have to be really smart person to kind of sell your security to somebody else. So when we were working in the IB domain, when we used to mark those illiquid bonds, ये थोड़ा सा अलग concept होगा आपके लिए, because ये इंडिया में exist नहीं करता है.
illiquid bonds ये वो concept है जो basically US and Europe markets में पाई जाती है. It's not there in India at all. So all these illiquid bonds, as a trader, then you are calling yourself as a market maker. मैं ज़्यादा jargons यहाँ पे use नहीं करूँगा, but फिर भी एक आपको idea दूँगा मैं. Fine. So as a market maker, you will be marking these bonds and be pricing these bonds by yourself. Basically, the bonds are priced by forces of demand and supply, that equilibrium. But illiquid bonds को आप खुद से भी mark कर सकते हो. So when you go ahead and when you try to sell these bonds or sell these CDOs, collateralized debt obligation, or CDS, credit default swaps, right? MBS, mortgage-backed securities, right? When you have to kind of push it through, you have to be a good salesman. You got to be really, really good at selling. So the trading part will involve all the math that you need to understand, the valuation of that particular security, but you got to get it through the other company. So we would work with Goldman, Morgan, JPMC of the world to kind of get it done and dusted. So yes, you got to be a really good marketing guy too. On the other hand, when you talk about investment managers, when you talk about profiles like portfolio managers, when you talk about profile like fund managers, सेम टाइम आपको सेल्स भी आनी चाहिए, बिकॉज फंड मैनेजर के बारे में अगर हम बात करते हैं बहुत हाई लेवल पे बैठते हैं डेफिनेटली, बट अगर एक फंड मैनेजर को सेल्स करके वो एक कॉर्पस उसके फंड में लाना है, he has to convince the investors that why you should be putting your money into my fund which I am managing. और एक फंड मैनेजर के नीचे बहुत सारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. When I was working with ICICI Bank, we had a lot of connections with the fund managers. So वहाँ पे ये tactics use करी जाती है. तो at the same time, finance आना भी चाहिए, थोड़ा बहुत sales भी होना चाहिए. ऐसे बहुत सारी profiles है. जहाँ पे sales and marketing go hand in hand. Mergers and acquisition. Yes, I had interned with one of the boutique investment bank, Hong Kong based, right? जहाँ पे we had this. It was a summer internship project हमारे लिए, जहाँ पे we had a client. It was a Spain-based company. They were making some glasses. उनके glasses बहुत strong थे. It would help, your defense companies to kind of hit the enemy, desert में and all that, cyclone and all that. So यार अगर like we were in touch with Lockheed Martin for that deal, fine. So you had to convince Lockheed Martin why you should put money into this company or why you should acquire this company. So you need to know the financials, you need to know the financial statement analysis, you should know the valuation, all this stuff. At the same time, sales भी आना चाहिए, है ना? ये सब चीजें होती है. तो यार आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि यार फाइनेंस में खाली ऐसा डेस्क जॉब नहीं होता कि बैठे हैं एक्सेल पे काम कर रहे हैं. फाइनेंस इज वास्ट. आई कैन डेफिनेटली टेल यू फाइनेंस कितना वास्ट कोई प्रोफाइल नहीं होता. I mean, everybody talks about marketing, everybody talks about operations, and everybody talks about HR if they're from that particular background. But I tell you, I've seen finance top to bottom. Finance कितना वास्ट कुछ नहीं होता. Then somebody saying that finance बड़ा monotonous होता है. मोनोटोनस वगैरह कुछ नहीं होता. ये सब दिमाग का खेल है आपको, ठीक है? मोनोटोनस वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर आप वहां पे इंटरेस्ट लेते हो, अगर आप स्विच मारते हो, अगर आपकी जॉब इंटरेस्टिंग है या फिर अगर आप अपनी जॉब इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो मुझे लगता है मोनोटोनस कुछ नहीं होता. ये जस्ट अ माइंडसेट. हर एक चीज वैसे देखा जाए तो मोनोटोनस हो ही जाती है ना कुछ साल में. सो मुझे लगता नहीं है कि यार वो मोनोटोनस है. फाइन. I have a drop here in my CV. I will convert top. Guys, let's not get into the college wala questions. I would rather take finance related questions only because this entire session is for finance. So I hope I could answer that. CFA plus MBA possible? How to manage time? Yeah, CFA plus MBA is absolutely possible. CFA level 1 का जो curriculum है, वो तुम्हारे MBA के first year का curriculum है. CFA level 2 का जो curriculum है, वो तुम्हारे MBA first and second year को मिला के curriculum है. So बहुत सारे बच्चे ABC देखो, JB देखो, HP Gents, MDI, जितने भी टॉप 20, टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स है कंट्री में, मोस्ट ऑफ द फाइनेंस का बच्चा लोग आर ट्राइंग फॉर CFA प्लस MBA. कुछ मेरे बैचमेट्स थे, they were chartered, they still wanted to do CFA plus the MBA. So it works, doesn't matter. Fine. ठीक है. So marketing and finance, MSc Finance in JB, how's the competition? Competition is good, yeah. Competition is rather very tagda. The professional courses for finance, you can do CFA. For finance, you can do CA. You can do CPA. You can do CWA, or currently called as CMA. Any alternative for CFA that you will suggest? CA,
सीएफए का बजट नहीं है तेरे पास, ओके यार हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि सीएफए का ऑल्टरनेटिव क्या है। वैसे देखा जाए तो सीएफए का ऑल्टरनेटिव कुछ ऐसा है नहीं आज सच, बट ये डिपेंड करता है कि क्या डरा रहे हो। वन सेकेंड नरसिम्हा क्या बोला? अच्छा, I'm not sure नरसिम्हा ये क्या था, I'm not sure, I'm not able to kind of understand that entire comment। ठीक है, फाइन। तो सीएफए का ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं, डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। अगर आप इक्विटी साइड जाना चाहते हो तो आपके लिए सीएफए बहुत बढ़िया है। अगर आप डेट साइड जाना चाहते हो तो आपके लिए एफआरए या फिर पीआरए बहुत ज्यादा जरूरी है। Can I switch to consulting after MBA finance? Yeah, definitely. Why not? See, consulting is not a specialization. Consulting is basically a part of MBA, which is a domain. It's not a specialization. There are only 4 specializations: marketing, finance, operations, and HR. So हर एक टाइप का बच्चा कंसल्ट में जा सकता है। तो मार्केटिंग कर, तो फाइनेंस कर, तो एचआर कर, तो ऑप्स कर, तो कंसल्ट में जा सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो एमबीबीएस के बारे में अगर हम बात करेंगे, एमबीबीएस में फाइनल, एमबीबीएस मतलब मैकेंजी पेरेंट कंपनी एंड बीसीजी, यहाँ पे फाइनेंस के बच्चे भी जाते हैं। या सो सीएफएपी दैट यू टॉकिंग अबाउट ना तन्मय, सीएफएपी को हमने इस तरीके से डिजाइन करा है कि सीएफएपी आपको एक एमबीए प्लस सीएफए लेवल 1 एंड लेवल 2 तीनों का आपको एक्सपोजर दे देगा, and that is more on a practical level. But again, CFAP को मैं alternative नहीं बोल सकता CFA का, because CFA is a huge thing. But yes, if you want to prepare for company placements, if you want to get good summer and if you want to get good finals, you can definitely go for CFAP. And that's one of the best. And we've been getting good reviews from students who have done CFAP from ABC, colleges like MDI, colleges like JB, colleges like KJ Sumaya, Dalmia, IMI, TACMI. So they've been getting good placement opportunities, and when they sit for placement, they actually crack it because the kind of knowledge they have out of CFAP, then वो help करता है उस तरीके से। Barclays, how is Barclays for IB? Very good, very good. Barclays is good. मेरे ख्याल से उसका front end इतना ज़्यादा है नहीं, but I think Barclays is doing phenomenally good as far as the middle office and back office is concerned. So they're quite good at it. Barclays is good. It's upcoming now. I'm sure it must be in top 10 as an IB house in the world. So Barclays is good. Finance is question छोड़ दे भाई, no B school question. Only finance. Can I join investment banking after working in commercial bank like HDFC Bank? Okay. Aniket Bhavgavkar. Okay. See, you can join IB after working in HDFC, but you cannot directly shift from HDFC to investment bank. That's not going to be possible. So you will probably have to do an MBA from a top-notch B school. फिर तेरे chances बहुत अच्छे हैं, फिर तू मजे करेगा। Hello sir, does it make sense to pursue finance with bad academics? Shivam, yeah, it does. ऐसा कुछ है नहीं फाइनेंस में। हाँ, एक चीज फाइनेंस का है, आपको फाइनेंस में पढ़ाई लगता है, बिकॉज देख यार, मार्केटिंग में तू बोल बच्चन दे सकता है, एचआर में तुम ज्ञान दे सकते हो, ऑपरेशंस और फाइनेंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्निकलिटीज, वहां पे तुम गोली नहीं दे सकता। फाइनेंस का एक ड्रॉबैक वो भी है कि तुम गोली नहीं दे सकते, बट अगर मैं देखो फाइनेंस, मेरा पर्सपेक्टिव अगर देखोगे, मुझे वो बड़ा सेक्सी लगता है, बिकॉज यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन लर्निंग। सी एडवोकेट्स दे कीप ऑन लर्निंग, डॉक्टर्स दे कीप ऑन लर्निंग। तो अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, अगर आप थोड़े से टॉकेटिव टाइप हो, पढ़ाई आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, थोड़े बोल बच्चन टाइप हो, देन गो फॉर मार्केटिंग और देन गो फॉर सेल्स। क्रिएटिव हो, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, सेल्स करो। फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, because you need to understand valuation, you need to understand statements, you need to analyze them, you need to understand CAPM model. ये बहुत nitty gritty है जो आपको करना पड़ेगा, but if you do it, there are a lot of engineers that do it, there are a lot of engineers that do it, there are a lot of commerce people that do it, there are a lot of arts, psychology, ये मेरे फार्मा वाले बच्चे भी देखे फाइनेंस, they do it because they know that once I do it, once I understand it, eventually they'll make shit lot of money. Fine. So that's how it is. छोले कुलचे after a long time brother, I'm good. नया पार लगा तो कहाँ पे बेटा? Joining internship next week. I am Deva. Hey, congratulations man. You cracked it, nailed it. Thank you so much for letting me know. Good यार, good. I'm कोई college comparison मत पूछना भाई, जो भी फाइनेंस के बारे में पूछ। CFA with distance MBA as a career financial, no.
CFA with distance MBA मत करना, it's not going to help you because MBA तो होना चाहिए तुम्हारा, एक अच्छा खासा कॉलेज का MBA होना चाहिए. What else you have? Is there non-accounting job role in finance? Okay, प्रज्ञा, बेटा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ. देखो ये ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का. अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है. ये तीनों चीजें अलग अलग है. तो जब मैं कहता हूं फाइनेंस, it does not mean accounting, and when I say accounting it may not mean finance also. but हाँ, एक कंसेप्ट बना है, एक परसेप्शन है, सब फाइनेंस में आता है तो हम उसको फाइनेंस कहते हैं. बिकॉज अकाउंटिंग का डोमेन पूरा अलग है और फाइनेंस का डोमेन अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है. थ्री ऑफ देम सिंक विथ ईच अदर इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बट रोल्स अलग अलग है, प्रोफाइल्स अलग अलग है ना. यू मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू मे बी अ CPA. तो जहां पे हम काम करते थे, जहां पे मैंने वर्क करा था IB में, so when we book a trade or when we value a trade, right, I know that this trade that whatever, like I'm buying credit default swap or probably I'm buying CDO और या फिर मैंने एक sovereign bond buy कर रहा हूँ because मुझे अपनी जो मैंने सिक्योरिटी परचेस करी है, जो भी मेरे पास एसेट है, उसको मुझे हेज करना है. और अगर देखेंगे सोवरेन बॉन्ड, जो फाइनेंस के बच्चे उनको समझ में आता होगा, सोवरेन बॉन्ड्स इज अ ग्रेट वे टू हेज योर पोजीशन. तो मुझे इतना पता है कि भाई ये जो है ना, ये मेरी बैलेंस शीट पे जा रहा है कहीं ना कहीं. अब उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, वो कैसे ट्रीट करेंगे, उसका कैसा अमोर्टाइजेशन होगा, ये सब मेरा अकाउंटेंट देखेगा, हम नहीं देखेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर, जहां पे CPAs जो है वो बैठे हैं, ये वो सब देखते हैं. And there is always been to and fro conversation between trading and the accounting desk. तो अकाउंटिंग थोड़ा अलग हो जाता है और फाइनेंस थोड़ा अलग हो जाता है. अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करता हूं, सो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स का कोई लेना देना ही नहीं है. अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूं, सो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग का कोई लेना देना ही नहीं है. जो इकोनॉमिक्स है वो अलग लेवल पे खेल रहा है, वो इन्फ्लेशन पे खेल रहा है, वो माइक्रो फैक्टर्स पे खेल रहा है, वो GDP पे खेल रहा है, वो पर कैपिटा पे खेल रहा है. वो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर रहा है अगले 5, 10, 15 साल के लिए. वो इनपुट फाइनेंस को आ रहा है, मान लो ICICI, गोल्डमैन, व्हाटएवर, वो इनपुट फाइनेंस को आ रहा है और उसके ऊपर फाइनेंस वाले बंदे अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. तो देखा जाए तो इट्स अ वेरी कल्ट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन योर टोज अगर आप फाइनेंस करते हो तो. इट्स द बेस्ट स्पेशलाइजेशन. इट्स जस्ट दैट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंस में. And it is always the case, when you tell anybody that you are MBA finance, एक थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है आपको. अरे भाई ये बहुत पढ़ा कोई, अरे भाई इसने बहुत पढ़ाई करी होगी लाइफ में, राइट, बहुत पापड़ बेले होंगे लाइफ में, समथिंग लाइक दैट. सो फाइनेंस का अपना एक अलग स्वैग है. आई होप व्हाटएवर आई एम सेइंग इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइस. सो या अगर कहीं कंफ्यूज हो तो मुझे बता देना. सर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, मॉर्निंग स्टार, गुड. 2 years of work ex, CFA level 2 clear plus 2 year gap. What will be the chances to convert ABC, and is it wise to do an MBA? Sharad Rathod, it's always good to do an MBA. If you're a chartered, if you're a CFA, it's always good to do an MBA from ABC, KIL, or at least from Excel or FMS. Why? Because CA is very technical. These guys are amazingly smart. They know how to build the financials. CFA knows how to value those financials. रादर थोड़ा सा जब हम DCA वगैरह करते हैं, राइट, सो एक CFA का लेवल थोड़ा अलग होता है. CFA थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह. हाँ, बट एक जो MBA होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी, अभी CFA जो लवर है, जो CFA लवर्स है, वो कहेंगे नहीं CFA इज द बेस्ट, MBA इज बुलशिट एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं होता. जो एक MBA वाला बंदा होता है, जो आपकी स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो CFA बनाता है. CFA वाला उसको वैल्यूएशन में डाल सकता है. एक MBA वाला बंदा ये सेंस लगा सकता है that how the hell these numbers are coming on my balance sheet. That is the most important thing, because at the same time when you talk about Satyam, PwC was an auditor for Satyam, they fucked it up. Enron, सबसे बड़ा स्कैम दुनिया का, Enron, they had this auditor Arthur and Anderson. दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर भाई मेरे. Enron, they fucked it up. Then Arthur and Anderson went under they got sealed, blah blah blah. फिर उसके बाद आर्थर एंड एंडरसन आया, एक नया कंपनी चालू किया. That company today is called as Accenture.
So Lehman Brothers, when you talk about Lehman Brothers, even they did manipulation with their $50 billion का liabilities as in they proved it as an asset. So ये चीजें matter करती है. तो मैं always कहता हूँ CA, CFA and then MBA finance, provided you do it from a top-notch institute like ABC, KIL, MDIs, JBs, SPJs, FMS of the world. तब एक अलग लेवल का आपका अंडरस्टैंडिंग होता है. हाई लेवल पे आपको जॉब मिलती है and then you move the ladder up. At the same time, we'll talk about CFOs. Most of the CFOs are the chartereds, but most of the bankers, IBs and all that are MBA finance. And there is a reason to it. There's a valid reason to it. ये कभी बाद में मैं आपको explain करूंगा कि why 99% of the chartered turned out to be CFO and chartered plus MBA finance भी है उसमें, and only MBA finance sort of not there to become a CFO, right? I remember one of the alumni of SRCC, Anshu Jain. He was my ex CEO in Deutsche. So this guy is SRCC BCom honors. He did his MBA from MIT Massachusetts मेरे ख्याल से, and he turned out to be the head of investment banking. So this was the guy who changed the entire investment banking world for the entire world. He was very aggressive. He was a great guy. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. तो मॉर्निंग स्टार में अगर आप हो, बिगदास अगर आप सीए हो, सीएफए हो, एमबीए करो टॉप नॉच बिल्कुल से, लाइफ बनेगी तुम्हारी. You'll make real good money. Real good money. Level 1 in May and then planning to do an MBA. That's okay, Manan. Not a problem. I've done my graduation in math. Know the Excel, PowerPoint also. What to do now, step by step. Shubhadeep, it's very simple, na? अगर आपको maths अच्छा आता है, you look out for MBA finance. Before you get into MBA finance, try to do some certifications which can give you a basic building, for finance. तो वो करना जरूरी है आपके लिए. By the way, वो maths का background आपको help करेगा. CFD and CFA can make a good combination. Oh yeah, definitely. CMT is more towards tech. So, okay, by the way, thank you so much for bringing this question up. So CMT and CFA. CMT is completely technical analysis. CFA is completely fundamental analysis. And the concept that is happening currently in the market, which I am a great fan of, which I also use, daily basis जब मैं trading करता हूँ, that's known as techno funda. So techno funda का मतलब होता है technical plus fundamental. So that's a great combination. So CMT plus CFA अगर कर पाया बहुत कमाएगा, करना थोड़ा टफ है, कर लेगा तो अमेजिंग. जयपुरे का फाइनेंस नहीं रे, मत कर. What good finance profile can I expect from SIBM Bangalore and MS Hyderabad? यार इसके बारे में थोड़ा हम लेट बात करेंगे because इसलिए मैं सेपरेट सेशन लूंगा. अभी मैं फिलहाल यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन है फाइनेंस के प्रोफाइल के बारे में वो पूछना. कॉलेज से क्या प्रोफाइल मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा अलग से बात करेंगे. Planning to CFA level 1 in August. If I join MBA, then will it be possible? Chaitanya, it will be possible. Rather, always remember, अगर आप फाइनल प्लेसमेंट को जाते हो, एटलीस्ट तुम्हारे रेज्यूमे पे लेवल 1 लेवल 2 होना चाहिए. अगर आप चले जाते हो फाइनल के लिए इन ब्लैकी, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं ब्लैकी में. अर्पित इज देयर विद अस. ही इज अगेन मेरे ख्याल से CFA level 1 level 2 कैंडिडेट. He got into Investment Bank, EY. Srishti is with us. I am Koikod, level 2 candidate, done and dusted, level 2 हो गया उसका. She is now joining financial consulting. She's got a great package. दोनों को बहुत तगड़ा पैकेज मिला है. So yes, the growth is good. IMK for finance मैंने अभी जिक्र किया बेटा. IMK is good. IMK is good for finance. उसका जो finance का जो अलग प्रोग्राम है, that is even better. Is CFAP enough for clearing basis of finance? CFAP is more than enough. The kind of program that we run CFAP का, यार not bragging but मेरा एक ड्रीम था, rather ये ड्रीम है, उसी के ऊपर हम काम करें. तो ये C2C हो या मेरा एनालिस्ट स्टेज हो फाइनेंस का, we're trying to impart knowledge. हम एक उस लेवल का एजुकेशन देना चाहते हैं जहाँ पे स्टीरियोटाइप चीजें बंद हो जाए. So आप जो भी पढ़ते हो, रेशियो एनालिसिस वगैरह, you know what, I'll tell you very simple. As an equity research analyst, if you actually work on street, it may be Dalal Street or it may be, let's say, somewhere in Singapore or maybe in Wall Street. You know what? Nobody cares a fuck about analyzing financial statement by using ratio analysis. Nobody does it. Ratio analysis, they don't even count it. But in B school, what we are taught is with the ratio analysis. Ratio analysis is bullshit because you are not analyzing anything. You're just putting the numbers in numerator and denominator. Finance folks,
Do you really understand what I'm saying? If I'm making sense, give me a thumbs up or just say yes. रेशियो एनालिसिस कौन करता है भाई? रेशियो एनालिसिस तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उठा रहे हो ना, बस तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर डाल रहे हो और उसको तुम एनालाइज कर रहे हो 1:1, 2:1, 1:2. It doesn't work in real world. So what we do at CFAP, we train you on these things which are actually working in the final world or in the actual corporate world. So ratio analysis बड़ा बचकाना चीज है, वो तो 10th या 12th वाला भी बच्चा कर लेता है. We don't do that in CFAP. We start with corporate governance. We start with board of directors. We start questioning the numbers which are coming on the financial statements. ये थोड़ा हाई फंडा हो जाएगा आप लोगों के लिए. I'm not sure ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. CPA plus MBA finance is beautiful. It's beautiful. You can do that. Rather, you should do CGMA. Rather than doing CPA, you should do CGMA. So CGMA is a combination of CPA, which is US based, and CIMA, which is UK based. So what happens in CGMA, आपको dual degree मिलता है. आप US के CPA कहलाते हो, legit, और आप UK के CIMA holder कहलाते हो, legit, and you are a bloody global accountant. हाँ, you are a bloody global accountant. दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हो, including US and UK. So go for CGMA. What you can do is, अगर आपने MBA कर लिया, तो आपको exemption मिलता है 4, 5, 10 से 12 सब्जेक्ट का, 10 से 12 सब्जेक्ट का भी आपको exemption मिलता है. उसके बाद अगर मैं सीमा के बारे में बात करूं, 3 लेवल है, अंडरस्टैंड, और इनकी जॉब्स अभी बहुत ज्यादा आने वाली है मार्केट में. अभी जो आईबी का जो हम बात करते थे ना, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड वो अपना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स, अपना ऋतिक रोशन, आई थिंक वो जॉब से ज्यादा भी अकाउंटिंग के जॉब्स आने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है. फाइनेंशियल कंसल्टिंग इज डेफिनेटली गुड मैन. व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट स्किल फॉर CFA? नथिंग. जस्ट हैव अ ब्लैंक माइंड, join and learn, and we will be like I personally teach, Srishti will be teaching you, there will be certain people, these are the guys who are working with Oak Capital, these are the guys who are working with Deutsche Morgan, JPMC, Goldman. These will be coming and they will be telling their own experiences with you. They will also be teaching you certain models, ये सब चीजें हम करेंगे. I have 3 years of experience in portfolio management. Any tip for short term course for good resume? Sarthak, you can do some. I mean, come on, man. You don't really have to do anything with respect to the portfolio management. तेरे को अगर करना है तो CFA कर सकते हैं. Okay, how many of you would agree with me if I tell you that CFA is nothing but portfolio management at the end of the day? How many of you would agree with me if I say CFA is nothing but portfolio management? कितना लोग agree करेगा? CFA plus MBA plus FRM. How this combination, sir? अच्छा देखो, पहली बात ये बेटा, MBA is a common, CFA equity, FRM debt. So confusion यहाँ पे ये है कि तुझे equity चलना है कि तुझे debt चलना है. दिखने के लिए बहुत सही दिखता है, बहुत ज्यादा valuable है, आपका रेज्यूमे बहुत तगड़ा होगा, no doubt about it. But as a recruiter, मुझे एक क्वेश्चन है, तुझे CFA करना था तो तुझे FRM क्यों कर लिया? तुझे FRM करना था तो तुझे CFA क्यों कर लिया? Because दोनों अलग लेवल पे हैं. Strongly agreed. ये फाइनेंस के दिग्गज लोग हैं मेरे ख्याल से, they understand. Because जब मैं कहता हूँ ना CFA is like portfolio management, and people go crazy. No, what the fuck? ऐसा नहीं है भाई, मेरे ऐसा ही है. It's just that CFA is little bit window dressed up. मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे पहले CFA पे, तो CFA के बच्चे आते थे, कहते थे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, CFA is not, MBA से better, CFA है, blah blah blah, something like that. Okay, ठीक है guys, spam मत करना बस. यार मैं करूंगा सीरीज, आज फाइनेंस पे कर रहा हूँ, कल मार्केटिंग होगा, स्लोली स्टडी, हम ऑपरेशंस HR भी कवर करेंगे. डोंट वरी, I'm Qualified is good for finance. I'm Qualified is good for finance. But you will not be getting high funder roles. मतलब बाहर के रोल्स नहीं मिलेंगे. IFT versus MDI for finance. IFT यार कॉलेज में क्वेश्चंस मत पूछा करो प्लीज. आपको बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछा करना. IB वगैरह, हेज फंड वगैरह, प्राइवेट इक्विटी, एक्विजिशन वगैरह. मोहित सिंह, CFA एंड टॉप 20 से MBA हो जाएगा प्रोफाइल का, क्या करूं? इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. CFA plus top 20 is a good combination. CFAP plus MBA or CFA plus MBA. Okay, CFAP plus MBA. Okay, CFAP plus MBA sort your life. तो अंदर जा,
तू देख तुझे क्या चाहिए। यार बहुत सारे बच्चे ना CFA कर लेते हैं MBA के पहले। अब जब बच्चा अंदर जाता है, 1 साल रुकता है, मेहनत करता है, बाद में उसको पता चलता है यार मेरे को डेरिवेटिव में चलना है, यार मेरे को रिस्क मैनेजमेंट में चलना है, जिसके लिए CFA काम नहीं आता। 5%। फिर बच्चे CFA छोड़ के FRM करते हैं। सो मेरे ख्याल से एक CFAP हमारा जो प्रोग्राम है, और लाइकवाइज जो भी प्रोग्राम आपको मिले जो हर एक चीज कवर करता है, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा बहुत टेक्निकल, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट एनालिसिस, थोड़ा बहुत हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, अब ये चीज करो। ये करने के बाद आप IIM चलो। IIM जाने के बाद अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि तुम्हें कहां पे इंटरेस्ट है। इफ आर अ नंबर्स गाय, रिस्क मैनेजमेंट इज गुड फॉर यू। इफ आर एन एनालिटिक्स गाय, फंडामेंटल एनालिटिक्स इज ग्रेट फॉर यू। आपको ये जानने की जरूरत है, बिकॉज ये एक कैलकुलेटिव डिसीजन होता है आपका। आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट करके बता देना। एंड CFA भी क्या है, रादर CFA क्या है, एकमात्र इकलौता इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस का, तो हवा है। FRA अभी अभी नजर में आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली सबसे ज्यादा जो जॉब्स है वो रिस्क मैनेजमेंट में आज की डेट में ज्यादा है। और उसमें भी अगर मैं बात करूं OTC, अगर मेरे फाइनेंस के बच्चों को समझ में आ रहा है, ओवर द काउंटर जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स है। सो अगर आप FRM करते हो यू विल मेक गुड मनी। ओके, केतन सर, व्हाई IIMs डोंट टीच कॉर्पोरेट टैक्सेशन इन MBA सिलेबस? देखो पहली बात ऐसा है कि जब हम IIMs के बारे में बात करते हैं, ये हमारा इंडियन एजुकेशन को एक श्राप है। इंडियन एजुकेशन को एक कर्स है, और वो श्राप ये है कि हम सिलेबस पे ज्यादा दौड़ते हैं, और एक सिलेबस ने हमारे करियर की लगा के रखी है। मैं लिख के देता हूं आपको, इसलिए आज ये नौबत है कि हम MBA के बाद भी CFA करते हैं। इसलिए आज हम IIM अहमदाबाद बैंगलोर जाने के बाद भी CFA करते हैं, चार्टर्ड करते हैं। एंड इवन IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा को चार्टर्ड लोग चाहिए, बिकॉज सिलेबस। So if you go to the IIMs, though, even in the top-notch IIMs, they have number of hours dedicated towards one module. You have to finish that. तुम्हारे एक ट्राइमेस्टर में तुमको खत्म करना पड़ता है। So it is always bird's eye view. You know, it's always bird's eye view. High level पे बातें होती है। So because उनका भी कोई गलती है नहीं यार, उनको वो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। फिर IIMs में थोड़ा रिगर होता है कि बच्चे खुद से करेंगे, केस स्टडी पढ़ के आएंगे। IIMA में ये रिचुअल है, rather this is the principle. Before you come to the class, you have to go through the case study. You have to analyze it with your group. You have to have your say on it. Opposite हो, favor में हो, whatever it is. So वहां पे थोड़ा रिग्रेस ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा सीख लेते हैं, और एक काइंड ऑफ उनकी मेंटालिटी भी उस तरीके से बन जाती है। तो अब अगर बात करेंगे IIM ABC KLI में, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तोड़ लेवल का कुछ फाइनेंस सीखोगे, you will be disappointed. It will be disappointed. JB is for IB rules. No, literally no. JB में ज्यादा IB rules नहीं आते हैं, and IB के बहुत ज्यादा misconception है. There are a lot of people, they don't know anything about IB. They talk a lot about IB. I have heard people saying that IB का जो लाइफ होता है, IB वालों का जो लाइफ होता है, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जो ऋतिक रोशन है उसके जैसा होता है। I have heard people saying that IB में आपकी जो सैलरी है, आपका जो बोनस है, वो आपके सैलरी के 1.5x आपको मिलता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 30 लाख है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत अच्छा कर गया तो आपको 60 लाख की सैलरी मिलती है। This is all not happening in reality. Okay, this is all La La Land. This is all La La Land. This is all दादी की स्टोरियां जो बचपन में कही जाती थी। IB में बहुत बड़ा चेंज हुआ है 2008 के बाद। ट्रेडर्स की बैंड बजाते हैं IB में, राइट? बीन देयर, डन दैट, आई कैन टेल यू। सो जब आप देखते हो ना IB के बारे में, IB US और IB वेस्टर्न इज वेरी डिफरेंट देन IB इन इंडिया। सो इंडिया में इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। इंडिया में IB रूल्स बहुत कम है भाई मेरे। सो IB के बारे में एक लेक्चर लूंगा मैं, भावना में नहीं बहना चाहता हूं मैं अभी, बट ये समझ लो जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो ऑलवेज सही नहीं होता। Maybe certain content is there to just attract a lot of viewers and subscribers and watch time and all that shit. It doesn't work like that. India में बहुत ज्यादा different है।
इंडिया में मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस की स्टोरियां बहुत अलग है, और यूएस यूके में, इंडिया में इनोवेशन बैंकिंग इन इंडिया इज प्रीटी वर्जिन मैन. So I'll try my level best to give you guys a little idea about it so that you understand the reality कि अच्छा ये पिक्चरों में होता है, वो होता है जैसा उसको दिखाया है, exactly वैसा होता है, इंडिया में नहीं यूएस में होता है. उसकी भी प्रोफाइल मैटर करती है, कौन सी प्रोफाइल है, फ्रंट एंड में कि बैक एंड में. IFMR is good, yes, IFMR is good for finance. Is it possible to enter IB and M&A without MBA? Sharad Rathore, yes. Couple of my friends are currently working in Goldman, currently in Morgan. They handle M&A deals. Couple of them are working with hedge funds. Couple of them are involved in the trading. Couple of them are into valuation. They are not an MBA. They are graduates from SRCC, Stephens, Symbiosis, Loyola, NMIMS, not NMIMS, National College of Commerce, then CF level 3 और chartered rank holder. तो ऐसे भी बच्चे हैं यार. Now I am very much interested to CFAP now. When CFAP, we will be starting a new batch by mid of April or end of April. We will start because we are revamping entire thing, and we are coming up with something very good. We are including cryptocurrency also, in this program. What course for derivative? You can go for PRM, or you can go for FRM, or you can go for NISM ka derivative. ICWA plus MBA Finance. See, honestly, ICWA, MBA Finance, South and North Pole. एक चीज पूरी कॉस्टिंग वाली है, पूरी कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला. कॉस्टिंग में मेरा हाथ बड़ा तंग है, मुझे कभी कॉस्टिंग अच्छा नहीं लगा, गॉड नोज व्हाई. एंड एमबी फाइनेंस में बहुत कुछ है, कॉस्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. कर सकते तो कर, बड़ा एक अच्छा चांस तुझे मिलेगा ब्रदर. अगर तू CWA करता है और MBA फाइनेंस करता है, यू कैन गेट इनटू हार्ड एसेट कंपनीज, यू कैन गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहां पे कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. वहां पे यू कैन रॉक, वहां पे बहुत अच्छा कर सकते हो आप. वीडियो ऑन MBA इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड बना देंगे. प्रोफाइल अच्छी नहीं है इसलिए CFP करने का सोच रहा हूं, लेकिन अगर मार्केटिंग करना होगा तो शुड आई डू CFP, देन व्हाट इज गुड. देखो, अगर मार्केटिंग आपको करना है और CFP वैसे यार, अगेन आई डोंट वांट दिस सेशन टू बी CFP ओरिएंटेड. एक वीडियो आ जाएगी वहां पे. आई वांट दिस टू बी फाइनेंस ओरिएंटेड, बट I'll just give an answer. If you do any financial certification, it actually helps you for your personal finances also. You should know what is compounding. You should know how to analyze a bank. You should know कौन से स्टॉक में तुम्हारा झोल हो रहा है, राइट? कौन से स्टॉक में तुम्हारा मैनिपुलेशंस हो रहा है, राइट? समथिंग लाइक दैट. I don't want to name those stock. Zip it up. I don't want to name the stock. मैं तुम्हें बोल दूंगा कि कौन से स्टॉक में ऑपरेटर बैठा है फिलहाल मार्केट में. God, I don't want to say that. That helps you to understand, CFP के बाद. That helps you to understand, right? Average past academics, how much does it affect final placement in top 20? Average past academics matter करते हैं top notch companies के लिए. Big 3, NBB, Big 4, PwC like companies, IB houses, yes, it matters a lot. So बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जब आप MBA में जाते हो आपके एकेडमिक्स मैटर नहीं करते हैं. This is utter nonsense and this is utter bullshit. ये वो लोग कहते हैं जिनके खुद के ठुके हुए एकेडमिक्स. Honestly, I'm being very honest. ये पार्टी जनता है. एकेडमिक्स मैटर करते हैं. For the big companies and for those big roles, exclusive roles, academics matter a lot. So let's just say if you fuck it up completely, 10th, 12th, graduation नहीं हुआ अच्छा, क्या कर सकते हैं? MBA का फर्स्ट ईयर होता है तेरे पास. फर्स्ट ईयर में being top 10, that might help you. That might help. And that is the reason, if I have to tell you the brutal reality, when you talk about I am ABC, for all the cream programs or all the cream profiles, it's IIM or SRCC, something like that, and with the great academics. तो भाई academics matter करता है. और ऐसा नहीं है कि अगर आपका academics बहुत खराब है आपको बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी, ऐसा दिल छोटा नहीं करते. There are exceptions. 10 में से 2 बच्चे निकल जाते हैं. You can be that exception, but
अगर पहले एकेडमिक्स खराब है, वो पहले के अगर पाप है, तो धोने का समय है एमबीए के फर्स्ट ईयर में. एंड इफ एनीबॉडी टेल्स यू दैट एकेडमिक्स डज नॉट मैटर इन एमबीए, दे आर मिसगाइडिंग यू. इट मैटर्स अ लॉट. टेक माय वर्ड्स, द मार्केट इज चेंजिंग, द सिनेरियो इज चेंजिंग, द एंटायर बी स्कूल इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स एकेडमिक्स. अगले 5-6 साल में आप देखोगे एकेडमिक्स के भाव बहुत ज्यादा होंगे, एकेडमिक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. सो आई एम सॉरी अगर आप ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो तो, बट इवेंचुअली होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कॉर्पोरेट्स कर ही देंगे ये सब चीजें. ठीक है, आई होप जब मैं आपको रियलिटी बताता हूं आपको टेंशन नहीं आता. आया तो भी लोड मत लेना, आप रेक्टिफाई कर देना. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई टेल यू द रियलिटी, बिकॉज़ यू शुड नो व्हाट गोज इनसाइड बी स्कूल. बिकॉज़ बहुत ज्यादा कहानियां होती है, रोजी रोजी पिक्चर्स बहुत होते हैं. ऐसा नहीं होता. If today I tell you academics don't matter, you get into a B school and you party and blah 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 blah, and if you don't get qualified for good companies, then यार आप बोलोगे सर आपने बताया तो अच्छा होता. नहीं तो वैसे भी तुमको पता है ICICI बैंक में जॉब लेना, डिलॉयट में जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है. ये तो मास रिक्रूटर है, ये हर जगह जाते हैं. It's not that a big deal. But if you want to make it to the cream profile, people die for. Goldman, McKinsey, Deutsche, JPMC, TAS, they're like big companies in the world. अकाउंट्स मैटर करता है भाई मेरे, बहुत ज्यादा मैटर करता है. आज फाइनेंशियल कंसल्टिंग रूल्स हाइपिंग, हेल यस, द एंटायर फाइनेंस डोमेन इज हाइपिंग. द एंटायर फाइनेंस डोमेन इज हाइपिंग. फाइनेंस में यू स्टार्ट छोटा छोटा, बट इवेंचुअली इट बूम्स. यू नो, you end up making shitload of money in finance. Actually yes, that's correct. तो फाइनेंस के अगर आप देखोगे मार्केटिंग में ग्रोथ आपकी डेजिग्नेशन वाइज बहुत फटाफट होती है. मार्केटिंग में आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, आपका पैसा बढ़ता है बिकॉज़ ऑफ बोनस. बट देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज इन फाइनेंस जहां पे यू मेक गुड मनी एंड इवेंचुअली यू मेक हेल लॉट ऑफ मनी. सो हाउ टू गेट इनटू गोल्डमैन एंड मॉर्गन फ्रॉम टियर टू बी स्कूल. वन ऑफ माय जूनियर फ्रॉम केजी सोमया इज currently वर्किंग विद गोल्डमैन सैक्स, बट शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट केजी सोमया. मैं इसलिए आपको कहता हूं कि यार आपको कुछ एकेडमिकली करना पड़ेगा. शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट. Moving ahead, is any NISM or any basic finance certificate required for CFA? नहीं Shubhrit, nothing is required. So that how to learn DCF? Google कर ले. Genman versus finance. Okay. Genman is a different thing. Finance is a different thing. Definitely. अगर आपको IB kind of profile में चलना है, या फिर आपको hedge fund kind of profile में चलना है, banks वगैरह में चलना है, finance करो. Genman is kind of master of everything. राइट. तो जेनमैन का वो फंडा है. तो जेनमैन इज लिटिल डिफरेंट. अगेन तुम्हारी चॉइस है बेटा, आप डिसाइड करो. मैं जेनमैन के लिए, मुझे कभी जेनमैन, आई मीन आई लव जेनमैन, नो डाउट अबाउट इट. आई गॉट जेनमैन टुवर्ड्स द आई मीन लाइक आफ्टर 3-4 इयर्स के बाद मिला. बट आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइनेंस लवर. तो मुझे इनिशियल स्टेज में अगर जेनमैन मिल जाता तो शायद से मैं ना लेता. मुझे फाइनेंस सीखना था. JBIMS for finance is good. It's very good. It's damn good. Will drop year affect my placement in top 20? Nothing matters. Drop year वगैरह घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता. ये सब ना कहावतें हैं, ये लोगों ने बना के रखी है. 20-20 साल पहले MBA करके जो आए हैं, इन लोगों ने ये सब चीजें बना के रखी है. People have no fucking clue what is happening in the B school. They have absolutely no clue. कितने सारे बच्चे यार गैप के होते हैं जो अपनी प्रोफाइल पे काम करते हैं. हाँ जी, प्रोफाइल पे काम करेगा तो गैप ईयर मैटर नहीं करता. अगेन ये भी मैटर करता है कि तू MBA किस में करता है. अगर तू फाइनेंस का बंदा है, तेरा 3 साल का अगर गैप है, तूने CFA करा, तूने फाइनेंशियल मॉडलिंग करा, तूने एक्चुअल में बहुत ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, तूने अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाया, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है तेरे गैप पे. वो बंदा बोल रहा है भाई ये बंदा आंसर सही कर रहा है, इसकी टेक्निकल नॉलेज बड़ी अच्छी है, आई एम गोना पिक हिम अप. तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये एक्चुअल में बी स्कूल में होती नहीं है. हमें डराया जाता है गैप है तो खराब होगा, गैप है तो ये होगा. देखो ऐसा भी नहीं कि गैप आपको मैटर नहीं करता, वो आपको हिट करता है 1%, 2%, 5%, 10%. बट अगर आप एक प्लान पकड़ के चले कि यार ये 10% भी मेरे को हिट ना करे, मैं अपनी प्रोफाइल बनाना चालू कर दूंगा, गैप डजंट मैटर मैन एट ऑल. इट डजंट मैटर, राइट. कुछ कंपनीज होती है जो कहती है कि हमें सिर्फ फ्रेशर्स चाहिए, वहां पे आपको नहीं लेंगे शायद से, बट वो रेशियो बहुत कम है. 100 में से 7-8 कंपनीज, not everyone, right? I just saw something. DShaw Financial Research Associate profile for undergrad. Good. It's good. DShaw is good. It's a bloody hedge fund. They're doing really good.
Disha is really good, by the way. You can go for that. Don't worry. I'm not good at quants at all. Will I be able to sustain MBA finance especially? So you're going to do NIB Pune. हाँ, NIB Pune वगैरह में जाएगा तो sustain कर सकता है. IMABC के लिए थोड़ा पंगे होते हैं because quants वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वो तो by default है. वो CAT में भी तो देखते हैं, right? अच्छा, अभी हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे लाइक्स का. भाई मेरे लाइक्स बहुत कम है. काहे? गाइस आई एम टेलिंग यू यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा. मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये बी स्कूल वाले बच्चों को भी नहीं पता होती है. सो मैं जितना भी आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ. डरना मत, याद रखना, इस कहां से सुनना, दिमाग में डालना कि हाँ सच ने बोला था, इसके ऊपर मुझे काम करना जरूरी है, नहीं तो अंदर जाके आपको शौक लेगा. बेस्ट रूल्स इन फाइनेंस अदर देन IB, there are lot many, by the way, there are super duper rules. So IB में भी there are rules like Beckett में rules है, valuation है, प्रोडक्ट कंट्रोल है. अब प्रोडक्ट कंट्रोल जो है, इट इज नॉट ओनली एंड ओनली फॉर IB. एडलवाइस के पास भी है. हाँ, वैल्यूएशन एडलवाइस के पास भी है. उसके बाद स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ICICI, all Indian banks, debt restructuring, all Indian banks, foreign banks, wealth management upcoming. Great, you got to be good with people, you got to be good with communications and sales. So wealth management is upcoming. Asset management companies, great. प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फाइनेंस कल्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा. इंश्योरेंस का प्रोडक्ट वेरी गुड. हेज फंड ग्रेट. प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल ग्रेट. boutique investment bank companies, great profiles they have. Mutual fund companies, again you can go as an equity research analyst. Broker houses, equity research analyst or pitch book writer or something like that, वो भी कल्ट प्रोफाइल होती है. So there are n number of profiles, like there are profile sub profile भी है वहां पे, बहुत सारी चीजें हैं. 1 second हाँ सर, VC फंड इंटरव्यू की प्रेप कैसे करें? Finding interviews very tough. Gunther, you are my kid, no? I'll have a session on VC by the way. ठीक है, बट VC के लिए आपकी लेवल पे बेटा आपको ज्यादा ग्रिल नहीं करेंगे वो लोग, बिकॉज वो अलग लेवल होता है, वो MBA में पूछा जाता है. VC के लिए वो खाली आपको इतना पूछेंगे. अच्छा देखो, अभी ना मैं जाते जाते आपको बहुत मस्त चीज बता के जाता हूँ, एंड आई नीड योर सपोर्ट. जो भी फाइनेंस वाले बच्चे हैं, आई नीड योर सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है? देखो, अब VC वाली चीज ये जिसने बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब हमें ये बी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता. इवन आई वाज नॉट टॉट दिस ईदर इन KJ और इन IIM अहमदाबाद. ये जो VC का जो बात कर रहा था, तो ये VC का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. मैं कहता हूँ, हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी वेयरइन यू एज अ वेंचर कैपिटल वांट टू फंड समथिंग? सो VC का वैल्यूएशन अलग होता है, DCF अलग होता है, जो सेटल्ड कंपनी होती है उनका वैल्यूएशन अलग होता है, वेंचर कैपिटल का वैल्यूएशन अलग होता है. सो व्हाट डू दे डू डिफरेंटली? So venture capital is basically they check the probability of that business to survive. That's a denominator factor. ये venture capital की, ये venture capitalist की खासियत है, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता. एक VC का वैल्यूएशन इस तरीके से होता है जहां पे वो सस्टेनेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी भी खेलता है. तभी जाके वो पैसा डालेगा, उसको पता तो चले 5-6 साल ये रुकेगा नहीं रुकेगा. So they work with numbers, they work with some stats, they work with hypothesis and regression. And that's when they come up with the probability of sustainability of this entire firm, or as an idea, because VC funds idea. It's a very, you know, not a very monotonous work. It's a damn good work. It's a damn intellectual work. How is ACCA? Idris, hold on, look, you're spamming. You're bloody moderator. You're spamming. Look, it's good. ACCA is good. Shah. This guy went bonkers, man. It's good. Last 2 questions, yeah. हमें पेटकर तू बता रहा है कि पूछ रहा है. I'm not sure, बेटा. Gap year plan, same level 1 CAT, after CAT finance internship with financial modeling. How's it? It's good, Mohit. It's good. Not bad at all. It's good. I just got placed at Press Vista Financials, Mumbai, investment and research analyst. Good. I'm skeptical whether I should take the job, work for 1 or 2 years, then go for MBA or MBA right away. If you can do MBA right away, please do it. Just do it. Finish it up. Because stress Vista ठीक है, अच्छा है, इतना भी ज़्यादा valued नहीं होगा. Yeah, Gunther, you can contact me, not a problem at all. So you talked about ACADS. What ACADS are bad ACADS? Saurav Pali,
Last question for the day. What acads are bad acads? Very wise and a very valid question. Thank you so much कि at least कोई तो पूछ रहा है ये question. नहीं तो बस हम bad acads ही करते रहते हैं. For ABC, anything which is below 8 is bad. For ABC, anything below 8 is bad. Even for that matter, for Blackie, anything which is below 8 is bad. FMS के लिए भी same होगा, Excel के लिए भी same होगा. So tier 1 college, anything which is below 8 is absolutely bad. अब बहुत सारे YouTube पे होंगे आपको बहुत बड़े-बड़े ज्ञान आपको शायद से लोग देते होंगे सोशल मीडिया पे कि नहीं यार 60 भी चलेगा 50 भी चलेगा. अंदर जाके आपको रियलिटी पता चलेगा कि 8 is also bad in Blackie. I'm not kidding. I'm being very honest with you. So yeah, understand कर लो please. हाँ, फेक मोटिवेशन के लिए तो बोलते हैं लोग, ठीक है, पर ऐसे नहीं होगा. Fine. Tier 2 के लिए anything below 65 is bad. For tier 2, anything below 65 is bad. For tier 3, anything below 60 is bad. Okay? Anything below 60 is bad. And you guys will also agree. जब मैं बात करता हूँ Blackie के लिए, तो definitely यार वहाँ पे 999 बहुत ज़्यादा होते हैं. At least 99 तो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो I'm being honest with you guys. तो वहाँ पे, but again, आप निकल जाते हो. आपके पास आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है. Maybe आप स्पेशल कैटेगरी वाले हो, नॉन इंजीनियर हो, और फिर भी आप रिजर्व कैटेगरी वाले हो. आप जब अंदर जाते हो तो कंपटीशन बढ़ जाता है फिर. बट अगेन यू कैन ऑफसेट दैट विद MBA फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. यू हैव लॉट ऑफ कमिटीज, यू कैन टेक लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. यार हमारे कुछ बच्चे हमने देखे हैं अभी जो IIMs में हैं, प्लेसमेंट होने के बाद भी दे वर्क विद देयर फैकल्टीज. Okay, they work with those PhD scholars and they help their faculties on some research and projects. वो सब आप कर सकते हो यार, करना भी चाहिए. Lawyer and MBA scope, very good scope by the way, very good. You can get into this thing, the legal side of finance. You can get into the security analysis and all that stuff, because वहाँ पे बहुत ज़्यादा scams वगैरह होता है. It's not scams as such, but manipulations होता है securities में. You can do that. You can do that. Cool guys, I hope यार ये सेशन आपको हेल्प किया. जाते जाते मुझे बताते जाना, फीडबैक बताते जाना कि सर सेशन में अच्छा लगा, मजा आया. We got to know certain things which are unique. थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ गया, ठीक है. It helps me to understand, आप लोग अप्रिशिएट करते हो कंटेंट नहीं करते हो, and that helps me to kind of come up with new content कि बच्चों को क्या चाहिए. मैं हम बच्चों को as a faculty mentor or whatever, like how I can make difference to your entire profile. और ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाकी सोशल मीडिया पे चीजें तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू नीड समबडी हु कैन स्पिट द ट्रुथ, टेल यू द रियलिटी कि देख भाई ये चीजें हैं, बिकॉज वो जानना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट नो दैट देन देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम नाउ. सो आई just would love to know your feedback on this. Like if you tell me कि हाँ this is helping us to know, I can have series of these sessions जहाँ पे we can talk about marketing, we can talk about finance, IB, finance का profiles in depth manner. We can talk about operations, we can talk about HR, we can talk about techno funder roles, we can talk about FinOps के roles, which is what is financial operations. I can come up with a lot of content for you guys. Okay, that's it from